Have you ever wondered why a bacteria is able to survive with a single cell and we humans require over trillions of cells to survive? Hello and welcome back to the BioBeat by Henny, your place to study smart, not hard. In today's lecture, we will be covering the prokaryotic cell, the structure of prokaryotic cell. Before starting the prokaryotic cell, in NCERT, there is some data given regarding the size and shape of cells, right? So I just want to tell you that we will be covering the size and shape of cell in the very last lecture, okay? Because it's only the data and you need to remember them. Also, the shapes and size, we know that all the cells vary in shape and size, right? So we will be covering the shape and size in the last lecture. In today's lecture, we will be covering the structure of prokaryotic cells. So let's start with prokaryotic cells. Now, if I am talking about prokaryotic cell, the very first example that comes in my mind is bacteria. So let's understand the structure of bacterial cell because bacteria is a prokaryote, right? So we will understand the structure of bacterial cell and yeah, it is a prokaryotic cell, so it's one and the same. So example we can take of bacteria. Now let's see what's the structure of bacterial cell. The very first thing that every cell has is cell membrane. So they have a cell membrane. What is the function of cell membrane? See, each and every cell has a cell membrane, right? So what's the function of cell membrane? Cell membrane functions as a differentiating structure. The cell is made up of semi-fluid matrix. Each and every cell consists of some semi-fluid matrix that is known as cytoplasm. See, cell contains semi-fluid matrix that is known as cytoplasm. Also, cell is surrounded by fluid, right? Body fluids are there, right? So the cells are surrounded by body fluids. To separate the body fluid and cytoplasm, there is this membrane known as cell membrane. So cell membrane functions as a separating structure. It is present as a compartment between two fluids, right? Okay. Now, outside cell membrane, this prokaryotic cell has a cell wall. Okay. Outside the cell membrane, there is another layer known as cell wall. What is the function of cell wall? Cell wall acts as a protecting layer. Okay, it prevents the cell from bursting. Now, the cell contains this fluid, right? So, if the amount of fluid exceeds a particular limit, it will it will cause the cell to burst. Okay, so to prevent the bursting of cell and to prevent the collapsing of cell, these cells have a another layer around, surrounding the cell membrane known as cell wall. Then, in some bacteria, I'm not talking about all the prokaryotic cell, I'm saying that some bacteria contain another layer around the cell wall, and it is known as glycocalyx. Okay, some bacteria have another layer outside the cell wall known as glycocalyx. What does this glycocalyx do? This glycocalyx prevents the bacteria. It prevents the bacterial death
from human immune system. Now suppose some bacteria enters into my body. Certain bacteria do not have glycocalyx. Those bacteria will be killed by my immune system. But if certain bacteria have these glycocalyx, it will prevent my immune system to kill them because my immune system won't be able to recognize them. Okay, so glycocalyx protects the bacteria from my immune system. Now, this glycocalyx can be of two types. The glycocalyx can either be a tough capsule or loose slimy layer. The tough capsule, the function of this tough capsule is protecting the bacteria, whereas this slimy, loose slimy layer, the function of this loose slimy layer is in adhesion. Also, it prevents the loss of ions and fluids from the bacterial body. Now see, there is this glycocalyx, the cell membrane. What is this cell membrane made up of? In every cell, in each and every organism, the cell membrane is made up of phospholipids and proteins. Okay, cell membrane is same in all the organisms. The composition may differ, the percentage of the composition may differ, but in each and every organism, the cell membrane is made up of phospholipid. Then comes the cell wall. What is the cell wall made up of in bacterial cell? In bacterial cell, the cell wall is made up of peptidoglycan. Okay. Then we talked about cytoplasm. The cell contains cytoplasm, right? I can say that 90% or I can say the entire volume of cell is occupied by cytoplasm. So cytoplasm occupies entire volume of cell. It occupies volume of cell. Okay. The cytoplasm is the main arena where all the chemical reactions occur, right? Each and every cell in any organism performs various functions. They carry out reactions in them, right? So, which is the place where all these reactions occur? All the metabolic and chemical reactions occur in cytoplasm. So, cytoplasm is the main arena where all the reactions occur. So, it is the site of reaction. Okay. Now, talking about prokaryotic cell, they do not have a well-defined nucleus, right? So they have this DNA. This DNA, double-stranded circular DNA. Okay, they have a double-stranded circular DNA lying naked in the cytoplasm. They do not have a well-defined nucleus. They do not have a membrane around this nucleus. Okay, so they have this nucleus, the nucleus of this sorry, they do not have a nucleus, right? So their genetic material is lying naked in the cytoplasm. What is this genetic material? It is double stranded circular naked DNA. Okay, now certain bacteria also have this extra chromosomal double stranded circular DNA. They have extra chromosomal double stranded circular DNA. So इनका जो ये DNA होता है वो कोई क्रोमोसोम में नहीं पड़ा, वो इसका जेनेटिक मटेरियल के साथ नहीं पड़ा है. It is kept separate. It is present there, okay, in the cytoplasm, but इनके साथ नहीं पड़ा. Okay, so it is a double stranded circular extra chromosomal DNA और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं plasmid. This is known as plasmid. See, this plasmid is able to replicate independently. It does not require anything, or it doesn't require help of anything to replicate, right? It can replicate independently. Then this plasmid contains certain genes. What are these genes? See,
Some plastids contain antibiotic resistance gene. What do they do? Suppose किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट करा मुझे, अब उस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, मैं एंटीबायोटिक खाऊंगी। एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरिया को किल कर देती है। पर अगर उस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो वो रेजिस्ट करेगा इस एंटीबायोटिक को और मेरी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगी। So the plasmid contains antibiotic resistance gene. It also contains, see, this plasmid, see, if some bacteria has this plasmid in it, it is known as positive, F positive, and if a bacteria doesn't have this plasmid, it is known as F negative. Also, ये प्लास्टिड क्या करेगा? प्लास्टिड को एक केमिकल रिलीज करेगा जिसकी वजह से पिलाई का फॉर्मेशन होगा। पिलाई क्या है? एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन से अराइज होता है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू पिलाई, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस इज नोन एज पिलाई। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कॉन्जुगेशन। What exactly happens here is, see, plasmid is the main reason जिसकी वजह से पिलाई का फॉर्मेशन हुआ। पिलाई क्या करता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। समझो, एक बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एक बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है। जिसके पास प्लाज्मिड है उसको बोलेंगे F पॉजिटिव, इसको बोलेंगे F नेगेटिव। अब इसके पास ये F पॉजिटिव है, प्लाज्मिड है, इसने पिलाई को बनाया, पिलाई बना इसकी वजह से, ठीक है। इसके पास नहीं है तो इसके पास कोई पिलाई भी नहीं है। अब ये पिलाई क्या करेगा? पिलाई जो है ना, वो एक बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है उसका पिलाई उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट होगा जिसमें पिलाई नहीं है, या प्लाज्मिड नहीं है, और उस पिलाई की वजह से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। You getting my point? There is this bacteria F positive और एक बैक्टीरिया है F नेगेटिव, ओके। F पॉजिटिव के पास प्लाज्मिड है, इसके पास नहीं है। F पॉजिटिव है, प्लाज्मिड है, इसकी वजह से पिलाई बना। अब ये पिलाई जो है वो F नेगेटिव के पास गया और इधर से इसने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और बैक्टीरिया में ऐसे तो देखा जाए तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, पर ये कॉन्जुगेशन को हमने इक्विवेलेंट मान लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ओके। तो पिलाई बना। अभी कई बार ऐसा होता है, सी, एट सम प्लेसेस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द इनफोल्डिंग्स, ओके। थोड़ी बहुत ऐसे इनफोल्डिंग्स बन जाती है। सपोज ऐसे लेमेल जैसी भी हो सकती है वो इनफोल्डिंग, वो ऐसी वेसिकल जैसी भी हो सकती है, फिर वो ऐसे ट्यूब्यूलर भी हो सकती है ना। तो ये सारी जो इनफोल्डिंग्स है इनको हम बोलेंगे मीसोसोम। We call them mesosome. What is the function of mesosome? See, mesosome इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और इनके पास एंजाइम्स होते हैं। इनके पास एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो they have these respiratory enzymes attached to them, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेल्स जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उनके अंदर मीसोसोम होगा ही होगा, ओके। दे मे हैव और दे मे नॉट, बट रेस्पिरेशन तो सब में हो रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं कि रेस्पिरेटरी एंजाइम सिर्फ मीसोसोम में है, या आपने अभी ऐसा बोला कि मीसोसोम जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो जिनके पास मीसोसोम नहीं होगा वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, नहीं। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके साथ अटैच्ड होते हैं।
ये जो इनफोल्डिंग्स निकली है वो भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकली है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही इनफोल्डिंग्स बनी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे वो आपके मीसोसोम से भी तो अटैच होंगे। इसीलिए हमने बोला कि मीसोसोम का फंक्शन है रेस्पिरेशन में। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एटीपी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट में अगर एटीपी बनती है, राइट, तो मीसोसोम एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ one of the function of mesosome is formation of ATP, right? ATP formation. Then दूसरा इसका फंक्शन है सिक्रीशन में, ये सिक्रीट करता है। तीसरा इसका फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन? सी, जब भी कोई सेल जो है, बैक्टीरियल सेल, वो जब डिवाइड करने वाला, जनरली जैसे पढ़ा है वैसे ही सब पढ़ा है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है। जब कोई बैक्टीरियल सेल डिवाइड करने वाला होगा उस टाइम पे क्या होगा, जो ये आपका डीएनए है, सर्कुलर नेकेड डीएनए, ये जाके इसके पास अटैच हो जाएगा, इसके एकदम नजदीक आ जाएगा मीसोसोम के, और फिर ये मीसोसोम जो है वो हेल्प कराता है डीएनए के रेप्लिकेशन में, और साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। जो दो डॉटर बने होंगे ना, डॉटर सेल्स, उसको उन दोनों में ऐसे डिवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो मीसोसोम की ये फंक्शन है। ओके, देन वी हैव दिस फ्लैजेला। Certain bacterial cells have this flagella, जो कि इधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है, ठीक है। ये जो फ्लैजेला है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट, लोकोमोशन में, ओके। तो ये किस में प्रेजेंट होगा, इन मोटाइल बैक्टीरिया, ओके। देन दे में आल्सो हैव फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या है, फिम्ब्रे जो है वो इसमें हेल्प करती है एडहेशन में। सपोज कोई स्टोन है, उसके साथ एक बैक्टीरिया को चिपक जाना है, उधर से नहीं मूव करना, तो वो अपने फिम्ब्रे से उस स्टोन को पकड़ लेगी, ओके। तो फिम्ब्रे जो है वो, फिम्ब्रे भी ऐसे ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है, और ब्रिसल लाइक या फिंगर लाइक, स्मॉल फिंगर लाइक, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये फिम्ब्रे का काम भी क्या है, एडहेशन। Yeah, so this is the overview of bacterial cell. Also, there's this concept of gram positive and gram negative bacteria, right? तो एक सी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके क्रिश्चियन ग्राम ने। इन्होंने स्टडी करी थी, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टडी करी थी, और उसके अकॉर्डिंग, उनकी स्टडीज के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि जो बैक्टीरिया आपके होते हैं वो अगर स्टेन ले रहे, मतलब उसके ऊपर अगर आप स्टेन डाल रहे हो उस बैक्टीरिया में, एंड इफ द बैक्टीरिया टेक्स अप द स्टेन, राइट, पर्पल कलर का स्टेन, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। एंड इफ द बैक्टीरिया डजंट टेक दैट स्टेन, इट इज नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे हुआ, तो जो स्टेन होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन के साथ रिएक्ट करके आती है, ओके। तो स्टेन reacts with this peptidoglycan and gives color. अगर अब ये किस में ग्राम पॉजिटिव होगा, जिसके अंदर सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट लेयर। लेकिन अगर सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर है जो जनरली होती है लिपिड की, तो वो स्टेन नहीं लेगा, इसलिए वो हम बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। नाउ दे हैव, okay, in cytoplasm they have this ribosomes, right? These ribosomes are present in the cytoplasm. Ribosomes आपकी non-membrane bound organelles हैं, right? These non-membrane bound organelles named ribosomes are present in the cytoplasm of prokaryotic cells, and these ribosomes are 70S ribosomes.
In case of eukaryotic cell, the ribosomes are 80s, but in case of prokaryotic cell, these are 70s ribosomes. Okay. And one more thing कि ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन और ये ग्लाइकोकैलिक्स की मैंने बात करी, जनरली सारे सेल में जितने भी सेल हैं ये दो सेल्स विच हैव सेल मेम्ब्रेन उनके अंदर हम बोलते हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलके आपकी सेल एनवेलप बनाती है. ओके. But in case of bacteria, as they also have this glycocalyx, another additional layer, right? Glycocalyx. कुछ बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स होती है. तो हम इन तीनों को मिलकर बोल देते हैं सेल एनवेलप. ओके. और ये सेल एनवेलप का काम क्या है? प्रोटेक्शन में, preventing the bursting of cell and protecting the cell. So yeah, this cell wall, cell membrane, and glycocalyx together are known as cell envelope. Together as a unit is known as cell envelope. So yeah, this was all about prokaryotic cell. In the next lecture, we will be starting with eukaryotic cell, where things will get complex but interesting. If you found this lecture helpful, please like, share, and subscribe. And if you got any queries, comment down below. I'll answer to all your queries. Till then, bye and see you in the next lecture.